Good morning, future doctors. I am very happy to see you that you have opted a subject biology and going to become a doctor. Wish you all the best for the coming session. And you can see that the whole world is in the hand of the doctors these days, right? So doctors have become a great figure. They are saving the lives and you are going to become a doctor. Wish you good luck. So in the today's class, we have certain issues to discuss. Number one, we will be talking about our syllabus. Then after we will discuss about the principles, rules or the laws that will make the study of biology easier. Okay? हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते हो, न्यू एडमिशंस हो सकते हैं. मेरा नाम अरुण है और मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको ये तो आपको दिख ही रहा है. ठीक है ना? सो वी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस. हम देखेंगे सिलेबस हमारा क्या है, हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है. ठीक है ना? सो वी हैव 5 यूनिट्स. Diversity of living organisms, structural organization in plants and animals, cell the unit of life, plant physiology and animal physiology. Dear children, very simple. What you have studied in class 9th and 10th, almost those topics are elaborated here. जो कुछ भी आपने 9th और 10th में पढ़ा उन सब का डिस्क्रिप्टिव मटेरियल आपको क्लास 11th में दिया गया है और कुछ भी नहीं है. ठीक है ना? बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील करने की कोशिश ना करें, बहुत आसान है. सिर्फ आपको ये समझना है कि जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था उसका एलेबोरेशन आपको यहाँ पर मिल गया है. बट ऑफ कोर्स you have selected the subject and going to become a doctor, hence you have to study more and more with a deep and intense way, right? So remember, थोड़ी सी परेशानियां तो हमें आएंगी लेकिन ये सब आसान हो जाएगा अगर आप मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ रहूंगा. दोनों एक दूसरे के साथ देंगे and the things will be easier. So we talk about the different units. First unit is about the diversity of living organisms. Dear children, just recall class 9th. We had a chapter. Then we talk about the 5 kingdom concept. Res Vittata, Monera, Protista, Fungi, Plantae and yes, Animalia. ठीक है? तो हमने वहां पर पढ़ा था same thing you are going to study here but descriptively. Now we are going to have sub classification of the 5 kingdom or another type of kingdoms as well. Here you will find 2 kingdom concept, 3 kingdom concept, 4 kingdom concept, 6 kingdom concept even. Okay, so we will tell you later on. Then after we will be moving on to the structural organization in plants and animals. What is this? Structural organization, structure, internal as well as external. ऑर्गेनिज्म अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, लीफ का अंदर से स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेम अंदर से कैसा है, स्टेम बाहर से कैसा है. Let's take a look at this simple example. This is a leaf. This is also a leaf, but you can see the difference, right? So this is the difference and we have to study all these kind of differences in an elaborated way. बहुत अच्छे से इनको पढ़ना होगा. Different types of plants, different types of animals, but थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेटरी पावर को आप बढ़ाएं. ठीक है? अगर आप गार्डन में जा रहे हैं तो try to observe the different types of leaves, try to observe the different types of stems that you see around. Okay? आपको वही डिफरेंस पता चल जाएगा और आपके लिए वो चीजें बेहद आसान हो जाएंगी अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे तो. Then after third unit is about the cell. Remember, prokaryotic cell, eukaryotic cell, plant cell, animal cell. They are cell organelles, right? Like mitochondria, Golgi body, lysosome, etc. इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, बेहद आसान बात है. Okay, but interestingly here you will study one more thing, that is about the biomolecules, where we talk about the DNA, we talk about the RNA, their structure, their differences. Okay. Then after we will be moving on to the 4th unit, that is plant physiology, and 5th unit, that is animal physiology. These 2 units are basically related with the life processes. Do you remember? Do you remember class 10th? We had this chapter in class 10th. There we study about the different life processes. Okay. In plant physiology, we will study about photosynthesis. बड़ा सा है ना, छोटा नहीं. Respiration, growth and development, plant hormones, excretion, etc. Then after in animal physiology we will study about digestion,
that is nutrition, nervous system, excretory system, skeletal system, circulatory system, respiratory system, control and coordination, number of things. हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, हमारे कान कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको मज़ा आएगा धीरे धीरे जैसे आप सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे. ठीक है ना. बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं ना, जो आपको इस चीज़ को आसान बनाएंगे. व्हाट आर दोज रूल्स? ठीक है ना. देखो बेटा, मैं यहीं से बिगिन करता हूँ. मैं आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन बताऊंगा. इसी डेफिनेशन से हम उस ट्रिक को पकड़ेंगे कि वो क्या चीज़ है जो हमें आसान बनाती है. ठीक है ना. सो आई स्टार्ट डिफाइनिंग द बायोलॉजी and I try to break this word. If I try to break this word biology, here you see this is one word that is in fact bios, that means life, and this is the word logos, that means study. I'm sure you have got the idea. Study of life. This is the study of life, that means a branch of science. If I want to define it, the definition is like this: a branch of science that deals with the study of living organisms, cells, and their parts. So what we have observed here, that I try to break the word and I get an idea, right? So a branch of science that deals with the study of the living organisms, cells and their parts. ठीक है ना. सेल के बारे में पढ़ना, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना, how do they work, what is their structure, everything comes under biology. Now see, now I come to the point, what are those rules that we have to follow. हम चैप्टर पर तो बाद में मूव करेंगे, पहले हमें इन चीज़ों को बेहद ध्यान में रखना है बेटा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड दैट वर्ड्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंस है उनका. जैसे मैं बात करता हूँ उसकी लोगोस की. राइट नाउ वी गॉट दैट द मीनिंग ऑफ लोगोस इज स्टडी. बट इफ आई राइट बैक्टीरियोलॉजी, नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ लॉजी. Study, of course, now you have got it. That is the study of bacteria. Very simple है ना. आपने देखा इस वर्ड का यूज करके हमने इस चीज को पकड़ लिया. Now you look, I write one more. Virology. What is the meaning of logy? Study. Viro. Everybody is shocked. Virus. Okay, you know which virus I'm talking now. There are a number of viruses in the world. So virus, study of virus. Morphology, plant physiology, animal physiology, number of terms are there, number of branches are there. I tell you one more word, one more. Take an example. Here I am going to write lysis. Lysis means breakdown, destruction, degradation, killing, losing. किसी चीज का खराब होना, टूट जाना, ब्रेक होना उसका. ठीक है. So lysis means breakdown. Now if I write electrolysis, थोड़ा जाएं आप क्लास 11th में, आप याद करिए electrolysis, थोड़ा और याद करिए photolysis, थोड़ा और याद करिए क्लास 9th में plasmolysis. Here lysis, you know the lysis, you know this word. Lysis means what? Breakdown. Electrolysis, breakdown with the help of electricity. Photolysis, with the help of light. Plasmolysis, plasma means fluid. Breakdown of the fluid. This is called as plasmolysis. Now you have got an idea about the plasma. Plasma means fluid. Plasma meaning fluid. Now you see plasma, cytoplasm, neuroplasm, exoplasm, plasma, present in neurons, nerve cell, axons, exoplasm, in cell, cytoplasm, cyto means cell,
Cyto means cell. Now you tell me, if I write cytology, what do you get? Logy means study of cell. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिन्हें आप धीरे धीरे करके समझते चले जाएंगे. इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट वी टुगेदर go ahead and we will learn that. Okay, now the second thing about is the diagrams. We need to understand the diagrams, also how to draw them. बेटा डायग्राम्स की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? देखिए, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं विजुअल परसेप्शन. विजुअल परसेप्शन, देखकर किसी चीज को समझना. आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बच्चे क्रिकेट मैच देखते हैं या मूवी आप देखते हैं, एक दिन में देखा गया क्रिकेट मैच या मूवी आपको पूरी याद हो जाती है. क्यों? विजुअल परसेप्शन. लेकिन शायद हम एक किताब को इतना पढ़ ही नहीं सकते, और पढ़ भी नहीं तो शायद हम उतना एक दिन में याद नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम उन दोनों चीज़ों को मिला दें, डायग्राम, विजुअल परसेप्शन को हम ले जाएं, चीज़ों को हम डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करें. डायग्राम बहुत हेल्प करते हैं बायोलॉजी के अंदर. ऑलमोस्ट डायग्राम्स आपको दिए गए हैं. नंबर ऑफ डायग्राम्स आर अवेलेबल इन द बुक, बट इफ there is no diagram, try to draw the flow chart. Try to draw that diagram with the help of your teacher, of course with me. I will help you. ठीक है ना? डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है बेटा, इस बात को हमें नहीं भूलना है. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट साइंटिस्ट्स. अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग? साइंटिस्ट. द थर्ड थिंग इज साइंटिस्ट. ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि आप ईजियर हो जाए, कंफर्ट हो जाए साइंस के अंदर. साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे तो आपने क्लास 10th में ही जिक्र आया होगा, फादर. ओके, तो बायोलॉजी के अंदर क्या होता है, कई एस्पेक्ट्स होते हैं. हो सकता है किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किसी चीज को डिस्कवर किया हो, उसी को किसी ने स्टडी किया हो, उसी को किसी ने नाम दिया हो. दिस इज अ पॉसिबिलिटी वेयर यू मे फाइंड 3 डिफरेंट साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द सेम इश्यू, बट not always. There are some rare things or rare topics where you will find 3 different scientists, and of course you can understand that where there is a little confusion to understand, question comes from that area. Okay, हमें समझना है, उस चीज को हम बताएंगे आपको कि ऐसा कहाँ पर है. तो 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है, वर्ड्स का, डायग्राम्स का और साइंटिस्ट का. बाकी तो हम धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे. यहीं पर मैं आपको बताता हूँ 2 ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में. Father of biology, father of zoology, father of botany. Okay, who is the father of biology? A great philosopher. Just see, philosopher. He was not a scientist, he was a philosopher. Aristotle, great philosopher. He started this branch and told the whole world that try to study the organisms. And look, the medical science, the base is coming from where? Luckily, the same person was the father of zoology, that is Aristotle. Father of botany, where we study about the plants. In zoology, we study about the animals. In botany, we study about the plants. The person was Theophrastus. Dear children, one more area where we have to work, that is about the spellings, pronunciation, their meanings. There can be a little difficulty, but right from the beginning you have to take care of it, that while you speak, while you write, your pronunciation, right from the beginning try to make it correct. आप इसे सही करें, अपने टीचर को सुने, जितना उनको आता है उस हिसाब से तो कम से कम चलें आप. ओके, and we will try to give you the best. For today, this is enough. Keep these things in mind what I have told you today, and we will have another video after this regarding the different chapters. Till then, goodbye, remain safe, stay at home. Okay, thank you.